हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज की हम वीडियो में बात करेंगे हाउ टू ऐड फायरबेस इन फ्लटर। एंड ये पूरी सीरीज होगी फायरबेस की। हम इसमें सब देखेंगे ऑथेंटिकेशन कैसे करें फ्लटर ऐप में यूजिंग फायरबेस, एंड हाउ टू यूज क्लाउड क्लाउड फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस इन फ्लटर एंड स्टोरेज ऑफ फायरबेस एंड ऑल. So simply today we will see how to add Firebase in Flutter app. So this is my simply application, Flutter default application. Now हम इसमें ऐड करने वाले हैं Firebase. Now simply go to Firebase console and add to click or and give it the project name like my app. Now, and disable it. Now create. This will take a time. Yeah. सिंपली इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरबेस को कैसे ऐड करते हैं. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ टू sign up using email and password. Now what we have to do, we have to click on this flutter icon, then make sure that you have installed this Firebase CLI and log in Firebase, then install Firebase SDK, then create, then I have to move next, then I have to install this in the from any directory. Okay, now yeah, next I have to install this from the root of the project. या जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके रूट फोल्डर से हमें ये कमांड देनी है. या मेक श्योर तुमने लॉगिन किया हुआ है फायरबेस को. अगर उससे पहले करो तो ये एरर आएगी अगेन एंड अगेन. या अब हमें किसके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना फायरबेस का, वो हम डाउन एरो एंड स्पेस बार से सेलेक्ट करना है. मैं एंड्रॉयड आईओएस के लिए क्रिएट करता हूँ, मैकओएस के लिए फॉल्स और वेब के लिए फॉल्स करता हूँ. एंड क्रिएट. दिस सिंपली फर्स्ट चेक फॉर द ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐप. अगर नहीं है तो वो फिर रजिस्टर करेगा फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS. नेक्स्ट in console we have to next, then simply we have to use this. Okay, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू टू कंसोल. या मैं क्या करता हूँ, इसमें हमें ये चीज़ देनी है, हमें वो रन माई वर्ड मीन से पहले एंड मेक इट एसिंक. या एंड import the Firebase here. First Firebase option, and I think we have to install. Yeah, Firebase core. तो then हमें Flutter अब add Firebase core. Now this will add the power in PowerDev PowerSpec YML file. Yeah, Firebase core. Now if I hover this Firebase core, now it simply add this Firebase into our Flutter app. Hopes आपको ये समझ में आया होगा. Next video we will see how to auth the user using simple email and password using Firebase, and next we will see how to Google Auth and other things. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तक के लिए टाटा, बाय.